Good evening everyone. Good evening guys. So in this video I'm going to teach you two most important logical reasoning sets from last year CAT paper. So before we start, let me quickly introduce myself guys. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years for CAT and other MBA entrance exams, and I have trained more than 7,000 students for the MBA entrance exams, inclusive of CAT, SNAP, CT, MAT and all. Good evening Nicole. So guys, this is something about me. I do train the students for logical reasoning, data interpretation and quantitative ability. So guys, this is the simple agenda for today's session. We are going to cover two interesting sets of logical reasoning from CAT 2019. That is the last year's papers में से जो last year paper almost मैंने slot 1 already cover कर दिया है guys. This is part 4 of our session, and in first 3 parts I have already completed slot 1 of CAT 2019, and now by the end of Friday we'll be completing slot 2 of CAT 2019, that is LRDI complete solution to CAT 2019. That's what we are doing here. So today's agenda is we are going to solve 2 sets from CAT 2019. Okay, so let's start guys. Let me quickly tell you, you can join us on YouTube. Unacademy CAT4MBA is our new channel for CAT, and you can also join us on Telegram. CAT4MBA is our Telegram group where you will get the PDF and PDF for every session that we conduct on YouTube as well as on Unacademy platform. So guys, those who are preparing for MBA entrance exams and are planning to write SNAP, CT, CAT this year, I'll recommend all of you to go for 1 year subscription of Unacademy, where you'll be getting mock test and many more benefits, like will be directly interacting with the top educators of India. You can use my code SHAM1 to avail the 10% of discount. Okay guys, so let's begin. Let's start guys quickly. So Nicole, hello everyone. Okay guys, so you can just go through the information. As I said, we are just going to do logical reasoning today, so no DI set today. It's more logical. So be very careful while you read the information. And in both the sets of today's session, the information is slightly more straightforward. You will definitely understand. All of you will be definitely understand the information. The most important thing is, will you be able to connect the clues? If you are able to do that, you are through these puzzle. That's the simple guys. That's so the main important thing is be creative. थोड़ा सा out of the track सोचो, means think out of the box. You can, that's what you can say. Chalo, quickly read the information in the table below. So here's the information about the means 5 people, और वो कौन से languages बोल सकते हैं. So you can simply call 5 persons as P, Q, R, S and T, and the languages you can call as A, B, C, D, E and F, right? Just I will take the initials. Okay, then P के लिए Chinese है, English है. यहाँ पे simple information दिया हुआ है कि कौन पर्सन क्या लैंग्वेज बोल सकता है. दैट्स व्हाट वी नो. Right guys, quickly go through the information and see. Let me know in the comment section if you want to go to the next slide. If you have understood the first part. Hopefully all of you must be
able to understand that? That's a very straightforward information that you can have. Right, Nicole, done? Okay, so these 5 people are people from form 3 teams, that is team 1, team 2, team P. Each team has either 2 or 3 members, so we don't know या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, और we don't know सारे टीम में different है, equal है, that's we don't know up till now. Yes, that's great, Nicole. A team is said to speak a team is said to speak a particular language if at least one person of its members speak that language. मतलब guys सुनो, पूरी टीम में अगर एक पर्सन भी चाइनीज बोल सकता है तो we can say that team can speak the Chinese. That's what the simple logic you can have. Right, Nicole? Okay, let's start. So this is just the part of the information. I'll show you the next slide. So simply understand one thing. You have these 5 clues with you. You have that table with you, and I can get you to the sub questions जो इस पे पूछे गए हैं, so that first question देख के तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आएगा कि exactly तुम्हें क्या करना है. So here is the first sub question, that is, who among the following 4 is not a member of team 2? That's first question. I can get you to few more questions. Who among the following 4 people is part of exactly 2 teams? So basically, without solving that information, clues connect करके table use करके जब तक तुम जा नहीं सकते हो तब तक इसमें से एक भी सब questions होने के बहुत ही rare chances है. Who among the 5 people is a member of all teams? Look at the questions. All these are means multiple choice question. There is no theta question in this set. Apart from Chinese and English, which language are spoken by team 1? So if you look at this, it's very clear. Without solving this part, the first slide I'll show, the second. First one is very general. यहाँ पे clearly लिखा हुआ है कि हमें 3 teams बनाने, T1, T2, T3. Team has either 2 or 3 members. Team is said to speak a particular language if at least one of its members speak that language. Means कोई भी एक person भी अगर language बोलता है तो वो team वो language बोल सकती है. That's what you can just comprehend. And this is very simple table जहाँ पे टिक करके दिया है कौन person कौन से language बोल सकता है. Is it right? All of you understood this? So here's the set. Try to crack it. You have 2-3 minutes from now, and I guess that should be sufficient because guys यहाँ पे hardly तुम्हारे पास 5 clues है. So try to connect those clues, get some information about this. Think of the first question if you want. Who among the following 4 is not a member of team 2? इस question के बारे में सोचने से best way है कि तुम information को ही properly arrange करने की कोशिश करो. Simple. Look at the table, look at 5 clues and try to connect it and get something about it. Get some information in a structure. Arrange this information in a more structured way where you will understand कि T1 में कितने members है, T2 में कितने members है, T3 में कितने members है, T1 के members कौन से languages बोल सकते हैं, T2 के कौन से बोल सकते हैं, T3 के कौन से बोल सकते हैं. So that's totally up to you how to represent the information. It's the more important part, and that's the key point for all the logical puzzles. Logical reasoning में mainly यही होता है guys, तुम्हारे पास सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हारे सामने clue है, but तुम्हें उसको proper structured way में arrange करना है and get through it. चलो, hopefully Nicole, you can drop in the comment if you have any clue, any query related to any point presented over here. अगर 1 2 3 4 5 में से कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर.
So each team speaks exactly 4 languages and has the same number of members. No, yes, that's great. Okay, same number of members, तुम्हें क्या पता चलता है? हमें या तो 2 होंगे और I can say 3 होंगे, right Nico? Or 3. That's what you can conclude from it. Okay, exactly 4 language. तो T1 के 4 language, T2 के 4 language, T3 के 4 language, तीन ही टीम है, sorry. T1, T2, T3, each of the team speaks exactly 4 language. Okay, so that's very general information about it. Okay, let's move to the next one. Second one is quite important. English and Chinese are spoken by all 3 teams. That's it. अपना काफी काम sorted हो गया यहाँ पे. This information is more sorted. Okay, what I'll do, I won't be solving it for just for one question, that is sub question 1. I'll solve it completely for all 4 questions. Okay, so what I'll write here, T1, T2, T3. Every team speaks English and Chinese are spoken by all 3 teams. Means देखो 4 लैंग्वेज आने वाले हैं, exactly 4 languages. Each team speak exactly 4 language. उसमें से कंपल्सरी सारी टीम में इंग्लिश होगा, सारी टीम में चाइनीज होगा. Right? Okay, Nicole, what in your opinion, what is the most important clue after this? Okay, you have answered. One is C. Hopefully you are right. Let's check. Let's finish it, Nicole. Okay, have you completely solved it, Nicole, or you are getting just answer for the just first sub question? Do you want to answer a few more questions if you have completely solved it? Let me know in the comment section. Have you arranged the information completely? Okay, then B and F, Basque and French, by exactly 2 teams, and the other languages by exactly 1 team. That's what we know. Okay, then I'll suggest all of you to go for the next clue, because none of the team includes both Q and R. Then P and S are together in exactly 2 teams. P and S दो लोग साथ में आने वाले हैं, not completely. Okay, let's Nicole do one thing. Let's try to solve it completely and then we'll move to the sub question. Is it okay? Okay, that's perfectly fine. First थोड़ा सा means तुम judge कर सकते हो, but Nicole, the judgment is means is very subjective. ये सही भी हो सकता है, because there are many clues connected. You cannot say definitely वो हर बार वैसे ही होगा. It may happen कि वो सही भी आ जाए और गलत भी हो जाए. It's 50-50%. So Robert is in team 1 and so R is in T1 and Q is in T3. That's what I can simply say. So what I'll suggest is, अभी हमने लैंग्वेजेस के बारे में सोचा, 4 लैंग्वेज आने वाले, तो मैं यहाँ पे 2 ब्लैंक छोड़ देता हूँ. तो 2 लैंग्वेज तो हमें पता चल गया. एवरी टीम स्पीक एग्जैक्टली 4 लैंग्वेज, दैट वी नो. होपफुली यू गॉट इट अप टिल नाउ. ओके, अब ये हो गया लैंग्वेज के बारे में. अभी काम T1, T2, T3 वी कैन सॉर्ट इट बाय द पर्सन्स. अगर पर्सन्स के लिए हम देखेंगे तो रॉबर्ट इज इन टीम 1 एंड Q इज इन टीम T3. सो सिंपली यू कैन से R इज T1, Q इज इन T3. राइट निकोल? ओके, अब R T1 में है तो R जो लैंग्वेज बोल सकता है
वो लैंग्वेज T1 में होनी चाहिए, यस और नो? बिकॉज एक भी पर्सन अगर वो लैंग्वेज बोल सकता है तो पूरी टीम वो लैंग्वेज बोल सकती है, ऐसा हमें बताया गया है बेसिकली. सो दैट इज कंसिडर्ड. सो एक भी पर्सन अगर उस टीम का वो लैंग्वेज बोल सकता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड, रॉबर्ट कौन से लैंग्वेज बोल सकता है? रॉबर्ट कैन स्पीक अरेबिक, रॉबर्ट कैन स्पीक फ्रेंच. Am I right, Nicole? सो टीम 1 में कौन से लैंग्वेज आने चाहिए? इंग्लिश और चाइनीज तो हो गई, तो एक और आएगी, अरेबिक एंड फ्रेंच, बिकॉज आर वहां पे है. देन व्हाट अबाउट, वी टॉक अबाउट क्यू. क्यू इज इन T3. Q can speak Dutch and English, right? Dutch and English. तो इंग्लिश तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो एक चीज और पता चलती है, T3 में डच लैंग्वेज होनी चाहिए. तो ये 3 हमें पता चल गए, ये चारों हमें पता चल गए, राइट? Hopefully you're with me up till now. For any doubt, any query, you can just ping me in the comment. Drop the comment quickly if you have any doubt. So this is Dutch. Okay, let's go for the next clue. एक हमने ये यूज किया. Then one more clue we have. No team includes both Q and R. Q and R ये हमें साइड में रखना पड़ेगा. But the fourth clue we can definitely use that. P and S are together in exactly 2 teams. Nicole, can you tell me what is your conclusion by reading this 4th clue? This is quite important. If you can make inference out of this, you are through this puzzle. Can you make any inference about this? P and S are together in exactly 2 teams. P and S are together in exactly 2 teams. Now look at this. देखो, एक पर्सन तो T1 T3 में हो गया R and Q. तो अगर तुमने P and S let's say यहां पे लिया, P and S तुमने एक बार यहां पे ले लिया, बट दूसरी यहां पे, या तो यहां पे तो होना चाहिए. Can I say all these teams have equal members? अगर हमें पता है सेम नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो ये 2 तो नहीं हो सकता है. For sure it should be 3 3 3. That's what the inference you can make, right? Is it right, Nicole? Give me a thumbs up, guys, if you understand this part. For sure, every team will have 3 members. क्योंकि P and S 2 टीम में आने वाले हैं 2 बार. Yes, right. So we can move now. अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो ओके. ये मैंने 4th क्लू यूज किया, 5th यूज किया, देन हमने 2nd और 3rd हमारे पास बचा हुआ है. Q and R not together. So what we can do now? अब हमें एक तो कंफर्म है कि P और S यहां पे हो सकता है, या तो यहां पे हो सकता है, एक तो यहां पे रहेगा. लेट्स राइट. P कौन से लैंग्वेज बोल सकता है? लुक एट P and S now. These 2 are important for now. I'll erase all other things. P can speak Chinese and English. ये तो कहीं भी फिट हो सकता है, क्योंकि देखो निकोल, चाइनीज और इंग्लिश तो दोनों सारी टीम बोल सकते हैं, तो P तो तुम कहीं भी फिट कर सकते हो. S, the important thing is S. S के लिए क्या है? B and English.
बी एंड इंग्लिश। तो फॉर श्योर T1 में देखो, टेल मी P एंड S T1 में हो सकते हैं क्या? निकोल क्विकली टेल मी। S तो ये लैंग्वेज बोल रहा है, इंग्लिश एंड बी, और टीम 1 में तो बी आया ही नहीं है। इंग्लिश, चाइनीज, अरबिक, फ्रेंच, ये चारों हो गए, 4 से ज्यादा है ही नहीं। तो फॉर श्योर T1 में बी एंड एस नहीं हो सकते। Is it right, Nicole? Give me a thumbs up, guys, if you understood this part. P and S अगर यहाँ पे नहीं है तो for sure T3. Nicole, you haven't understand this part? Okay, let me quickly revise this thing. Means quickly I'll repeat it once more. Just a minute. Okay, Nicole, tell me T1 में P और S दोनों साथ में आने वाले हैं कितनी बार? 2 times, am I right? आफ्टर दैट 2 times अगर है तो फॉर श्योर ये मेंबर्स तो 3 हो जाता है, क्योंकि 2 times आएंगे तो फिर ये आर के साथ आएगा तो क्यू के साथ आएगा, तो 3 मेंबर एक में होंगे तो सारे में तो सही नहीं है, तो 3 हो गया। बट नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड वन थिंग, देखो पी तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, वो चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, क्योंकि चाइनीज इंग्लिश तीनों टीम बोलती है। बट बी एंड इंग्लिश, ये जो एस है ये 2 लैंग्वेज बोलता है, तो फॉर श्योर एस तो मैं यहां पे नहीं ले सकता हूं, क्योंकि यहां पे वो लैंग्वेज है ही नहीं। बी, यहां के 4 लैंग्वेज फिक्स हो चुके हैं T1 के। T1 में T1 में S नहीं हो सकता है। Am I right? Right, Nicole? Hopefully you understood now. So अगर S नहीं हो सकता है तो P और S दोनों साथ में 2 बार आए हैं, तो ऑफकोर्स हो, या तो T2 और T3 2 ही टीम बचते, 2 बार साथ में है, तो फॉर श्योर यहां पे PS तुम पे रख सकते हो फॉर T2 and T3. Is there any doubt now? Are you clear about all this thing? PS done with this, 2 बार आने चाहिए, right? Then Q और R दोनों साथ में नहीं आने वाले, P and S exactly 2 times आने चाहिए, exactly 2 टीम्स में होने चाहिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्लू आ जाता है अपना ये वाला सेकंड, एंड देखो Q एंड R तो साथ में रख ही नहीं सकते, ये कंफर्म है। देन इंग्लिश एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय ऑल 3 टीम्स, ये हमने यूज कर लिया है। बट बी एंड फ्रेंच, बास्की एंड फ्रेंच बाय एग्जैक्टली 2 टीम्स, एंड द अदर लैंग्वेज बाय एग्जैक्टली 1 टीम। यहाँ पे लैंग्वेज देखो, चाइनीज और इंग्लिश हो गया, बास्क्यू एंड फ्रेंच जो है वो एग्जैक्टली 2 बार आएंगे, और अरेबिक और डच 1 बार आएंगे, ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अरेबिक और डच हम ले चुके हैं गाइस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अरेबिक हो गया, डच हो गया, तो ये 2 प्लेसेस बचे हैं, ये बचे हैं बास्क्यू एंड फ्रेंच के लिए। फ्रेंच 1 बार हो चुकी है, तो इसमें से एक फ्रेंच है, और बी 2 बार है, मीन्स बी एंड फ्रेंच। एम आई राइट निकोल? अब तुम खुद बता सकते हो मुझे, एक ही कॉलम में 2 बी तो नहीं आएंगे, तो इट मस्ट बी 2 बार एंड फ्रेंच 2 बार हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे मिला के। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Have you understood this, Nicole? We have got all the 4 language by T1, T2 and T3. Is it okay up till now? After that, अब आते हैं यहाँ पे।
आर एंड क्यू तो साथ में है नहीं गाइस, तो अब इजीली तुम बता सकते हो ये लैंग्वेजेस हमें पता है सारे, तो वो बोल सकते हैं। अब T1 कितने लैंग्वेज बोल सकती है? इंग्लिश, चाइनीज, अरेबिक, फ्रेंच, राइट। T2 ये बोल सकती है, T2 में एक और मेंबर लगेगा हमें, और T1 में और 2 मेंबर्स हमें चाहिए। T1 R की हम बात करते हैं तो R कौन से लैंग्वेज बोल सकता है? I'll just erase this so that it won't create any confusion after this. Okay, quickly. R English, Chinese, Arabic and French. R के लिए अरेबिक और फ्रेंच हो गया। अब R के साथ हमें इस यहां पे Q तो नहीं ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। यहां पे Q नहीं हो सकता है, तो कौन बचता है? R के साथ Q नहीं हो सकता है, S तो बॉस Q है तो S नहीं हो सकता है। ये हमने निकोल हमने पहले से डिसाइड किया था कि S नहीं हो सकता और Q नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अभी ज्यादा पर्सन है नहीं अपने पास, 3 लोग तो चाहिए। Q और S तो चले गए, तो R के साथ कौन होगा? पॉल, जो इंग्लिश और चाइनीज दोनों बोलता है, और एक होगा T जो चाइनीज और फ्रेंच बोलता है, और रॉबर्ट अरेबिक और फ्रेंच बोलता है। सो फ्रेंच इज कॉमन, तो कौन बच रहा है? R के साथ P और T। हैव यू अंडरस्टूड दिस निकोल? देखो यहाँ पे S और Q तो नहीं होने वाले हैं। Any doubt? Nicole, please drop in the comment if you have any doubt up till now. We got R, P and T. Yes, right, Nicole, you are right. Okay, Nicole, can you tell me what is the composition for T2? T2 में इंग्लिश चाइनीज होना चाहिए, तो यहाँ पे P तो आ गया, तो P तो इंग्लिश चाइनीज बोल लेता है। इंग्लिश चाइनीज P के आने से हो जाता है, और S के आ जाने से यहाँ पे Q एंड इंग्लिश, तो B और आ गया, इंग्लिश चाइनीज और Q, तो एक फ्रेंच बचा है। बस हमें एक पर्सन चाहिए जो फ्रेंच बोले और जो T2 में आ जाए और कोई नई लैंग्वेज ना लेके आए, जस्ट फ्रेंच चाहिए, और फ्रेंच के साथ इन तीनों में से कुछ भी चलेगा, इंग्लिश चाइनीज Q। तो कौन हो सकता है बताओ? अब फ्रेंच लाने के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो रॉबर्ट, या तो देखो फ्रेंच के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, राइट निकोल? हमें T2 में फ्रेंच चाहिए, तो फ्रेंच या तो रॉबर्ट होगा या तो T होगा। रॉबर्ट को लेते हैं तो फिर वो अरेबिक बोलता है, और टेरेंस को लेते हैं तो वो चाइनीज बोलता है, तो चाइनीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो टेरेंस होना चाहिए वहां पे, राइट? दैट्स राइट, दैट्स डेफिनेटली राइट। सो आई जस्ट रिमूव द सर्कल्स। Okay, Nicole, was that easy? Easy set? Easy to do? Yes or no? How you find this? Is it easy, moderate, tough? You should always focus on your comprehension part. जब भी तुम सीख रहे हो ना गाइस, वो जो टाइम मैनेज करना है, जल्दी सॉल्व करना है, वो सब एग्जाम के फंडे हो गए। But while learning, you should just focus on your comprehension. Because तुम फास्ट करने जाओगे, इसका मतलब तुम्हें फास्ट आने नहीं लगेगा। It's totally depends, तुम प्रैक्टिस करोगे, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा इंप्रूव करोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा फास्ट होने लगेगा। जस्ट फास्ट करना है, ये टारगेट रख के, तो वो फास्ट नहीं होने वाला है। Yes, it was easy, right? I'll also rate this puzzle as very easy because this is the thing
most of the student will definitely do with given a proper practice of 20-30 sets. ऐसे टाइप के सेट्स सबको होने चाहिए, होते ही है. और ये कैट 2019 का एक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, सो यू कैन इजीली इन्फ्रेंस फ्रॉम इन दैट कैट के LRDI सेक्शन टफ है, बट सारे सेट्स टफ नहीं होते. इट विल डेफिनेटली गेट 2 to 3 इजी सेट्स. You need to pick those properly. Okay, so who among the following four is not a member of team 2? Bolo. TPS. TPS. So answer is Q. I guess Nicole तुमने सही आंसर दिया था, right? So that's sort of that was a good judgment, right? ओके, बट एनीवेज हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जजमेंट से नहीं होगा, उसको सॉल्व करना कंपलसरी था. हु अमंग द फॉलोइंग 4 पीपल इज अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 टीम्स? एग्जैक्टली 2 टीम्स. एग्जैक्टली 2 टीम्स में कौन दिख रहा है तुम्हें गाइस? एक तो S दिख रहा है और दूसरा T दिख रहा है. P तो 3 बार है, R और Q 1 बार है. तो T एंड S एग्जैक्टली 2 टीम्स. तो T और S होना चाहिए. हमें विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बोला है, तो यहां पे T दिया ही नहीं है, जस्ट S, राइट? देन हु अमंग द 5 पीपल इज मेंबर ऑफ ऑल टीम्स? इट्स सिंपली P. मैंने अभी बताया कि P तीनों टाइम पे दिख रहा है, P सब में है. And the last one, apart from Chinese and English, which language are spoken by team 1? So team 1 के तो पता है अरेबिक और फ्रेंच थे. ये भी तुम पहले ही करते थे. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. ये पहले ही हो जाता है, पूरा सॉल्व होने से पहले ही सबसे पहले हमें अरेबिक और फ्रेंच मिल गया था, राइट निकोल? यस. Done. Ready for the next puzzle, Nicole? Next set. Shall we move ahead? So here's the set 2 for today's session. ओके निकोल. निकोल तुमने अपने लास्ट पहले तीनों पार्ट देखे? हैव यू सीन दोस वीडियोस? मैंने कैट 2019 का सैटरडे एंड संडे में कुछ सेशंस लिए थे, 2 सीन. देन एक मंडे को सेशन लिया था लास्ट. तो डू वॉच दोस वीडियोस. काफी इंपॉर्टेंट सेट्स थे. ऑलमोस्ट 19 के 2 स्लॉट्स थे निकोल, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. So these are the today's session. We are solving sets from slot 2. One set, I guess it is from slot 1, because I have just covered 7 sets in last 3 parts. तो एक सेट slot 1 का है, बाकी slot 2 के हैं. अभी चलेंगे, ये slot 2 चल रहा है CAT 19 का. Okay, Nicole. So do one thing, go through those videos. There were few really important questions over there. And by Friday, तुम्हारा 19 का complete slot हो जाएंगे, दोनों slot 1 and slot 2. Okay, so let's go for this one.
So you can simply call it as princess, queen, rani, samragini. So you can simply call it as PQRS were the 4 finalists in a dance competition. So ये 4 dancers हैं PQRS. Then I'll just call it as A, B, G, D. A, B, G, D. Ashman, Badal, Gagan, Dew were the 4 music composers who individually assigned items to the dancers. Then each dancer had to individually perform in 2 parts. So every dancer's means you can simply say PQRS. इनको 2 डांस में परफॉर्म करना है, डांस 1, डांस 2, परफॉर्मेंस 1, परफॉर्मेंस 2, 1 2 1 2 1 2. So how many total performance will be there? There will be total 8 performance in total, right? 2 डांस आइटम्स उनको असाइन किए गए हैं बाय डिफरेंट कंपोजर्स. डिफरेंट वर्ड भी मिस कर जाते हो ना गाइस, तो भी यहाँ पे फिर ये सॉल्व नहीं होगा. रिमेंबर दिस. ये पी का डांस 1 डांस 2 2 डिफरेंट कंपोजर ने सेट किया है. क्यू का D1 D2 2 डिफरेंट कंपोजर्स. ओके, द फर्स्ट item performed by 4 dancers were all assigned by different composers. Now ये A, B, G, D कुछ भी हो सकता है. These are interchangeable. चार पहले D1 डांस परफॉर्मेंस जो है वो सारे डिफरेंट कंपोजर्स ने बनाए. No dancers performed her second item before the first item by any other dance. इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ये 4 डांस राउंड 1 कंप्लीट हो गया पूरा, उसके बाद ही राउंड 2 को शुरुआत हुआ है. That's what you can conclude. You can treat it as this is round 1, this is round 2. जब तक सबके चारों फर्स्ट राउंड के एक डांस नहीं होता है तब तक सेकेंड शुरू नहीं हुआ है. And one more last important condition: the dancers performed their second items in the same sequence as the performance of the first items. तो अगर पहले ऐसा होगा तो लास्ट में भी सेकेंड भी सीक्वेंस में हुआ. Is it right, Nicole? Hopefully you understood this part. So it's not compulsory ये PQRS होगा. मैंने ऐसे ही randomly लिखा था information just to represent it. So now it's your turn. You need to represent the information properly. Just keeping in mind all the clues. Nicole, is it going good? Is this some buffering issue or some connectivity issue? Am I audible clearly, Nicole? Voice is clear? Mahinder, is it okay now? Okay. No issue, guys. So both of you, have you understood the question clearly, Maninda? Is there any doubt in this? Forget about the video. You need not to see me. You just look at the screen and try to solve the questions, understand the information properly,
and in case of any doubt you can just drop me the comment so that I'll be able to explain that point to you. Have you understood? Any confusion in any of this point, Nicole? Okay, that's great, guys. Okay, so hopefully you understood this part. Okay, एक चीज ध्यान दो, PQRS वो सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे भी हो सकता है S पहले है, R बाद में है, Q पहले है, P बाद में है. It can be anything, we don't know, but चारों परफॉर्मेंस राउंड 1 के 1 2 3 4 पहले हो गए, फिर उनको दूसरा अलॉट हुआ. दोनों किसी भी डांसर के लिए दो परफॉर्मेंस जो हुए हैं वो दो डिफरेंट कंपोजर्स के थे. एंड पहले जो चार कंपोजर्स, so each dancer had individually performed in 2 dance items assigned by the different composers, and the first item performed by the 4 dancers. फर्स्ट आइटम देखो, सारे चारों PQRS चारों डांसर्स को दो आइटम दिए गए. तो पहला आइटम जो भी उन्होंने परफॉर्म किया, those items were of the different music composers. You need to be very careful, guys. इस सेट में simple you need is your observation and carefulness. That's it. It's not that much logical. Simple है, it's very simple. We'll go to the next part. Chalo, quickly. So these are the 5 points. 1 2 3 4 5. You need to understand, connect it. बहुत simple है. And this is the first question. We'll then move to the first question. Which of the following is true? Okay, so what I'll do, we'll just read this instruction. So you can spend 2-3 minutes. By the time I just explain the clues, in case of any query, any doubt related to any point given over here, ask me the doubt. I'm here to elaborate, explain what exactly it means. But I want you to try first and then I'll explain, so that we can finish it quickly, because this is my way of teaching. So most of the time मैं students को पहले time दे देता हूँ, but after that we can speed up and quickly finish it, rather than just me explaining everything. You won't be benefited, guys. Okay, so no composer who assign item to princess assign any item to queen. तो सिंपल ये बोला है कि प्रिंसेस को जिसने P को जो कंपोजर है वो Q को नहीं है. नो कंपोजर हु इज असाइन टू रानी इज असाइन टू एनी आइटम टू सम्राग्नि. तो जिसका डांस आर ने कंपोज, जिसके डांस का म्यूजिक आर ने कंपोज किया है, सॉरी जिसने भी रानी का डांस का जो म्यूजिक कंपोज किया है, उसने सम्राग्नि के लिए कंपोजर वो नहीं है. तो सिंपली यू कैन रिमेम्बर, गाइस, इसको यूज करने जैसा कुछ नहीं है. ये तो हम लास्ट में देखेंगे चेक करके कि ये सही जा रहा है कि नहीं. विल जस्ट कीप दीज 2 sides 2 clues aside and just focus on 3 5, then we'll cross check for कि फर्स्ट एंड 2 सही जा रहा है कि नहीं, जो भी हम पॉसिबिलिटीज बनाएंगे उस पे. Done? Okay, so the first performance was by princess, that's what we know, and this item was assigned by Badal. Badal is the music composer for princess, that's what we can say. Okay, अब अगर बादल ने प्रिंसेस के लिए कंपोज किया है तो बादल ने क्वीन का कंपोज नहीं किया होगा. That's what we know. That's the meaning of the first clue. Hopefully you're clear with all the possibilities. Okay, Maninder. Maninder, don't count the possibility, dude. Simple one thing, do not count the possibilities, because question हमें number of possibilities count करने पे तो कुछ पूछा भी नहीं है. If you look at the question, if you go ahead, true, false, then sixth performance was composed by, then which pair of the performance were composed by the same composer. So mainly
मनिंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कंप्लीटली सॉल्व करके ही पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे. सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू फिट सम पॉसिबिलिटीज. ओके, जस्ट डोंट रीड वन क्लू एंड से 8 पॉसिबिलिटीज है. यस, दैट्स राइट, यू नीड टू डू मींस थिंक दैट वे, but try some other clue and reduce those possibilities. Okay, so the first performance was by Princess and the item was assigned by Badal. So what I'll do, I'll write here P, and the first performance was performed by P. देखो अगर उसका D1 item 1 डांस आइटम 1, डांस आइटम 2, दोनों डिफरेंट कंपोजर्स को दिया होना चाहिए. और यहां पे 4 डांसर्स हैं. वी डोंट नो द सीक्वेंस, उन्होंने कौन से सीक्वेंस में डांस परफॉर्म किया है. सो आई जस्ट राइट हियर एज फर्स्ट परफॉर्मर is P, then second performer, then third performer, and the fourth performer. And I can say the same sequence will follow for dance item 2 as well, right? So this is the first, second, third, fourth, and this will be 5th, 6th, 7th, 8th. जो फर्स्ट करेगा वो 5th करेगा, जो सेकंड करेगा वो 6th करेगा, जो थर्ड करेगा वो 7th करेगा, जो 4th करेगा वो 8th करेगा. Am I right, Nicole, Maninder, all of you, both of you guys got it this part? Is it right? Is there any confusion up till now? Quickly drop me the comment so that I'll be able to elaborate you. Otherwise this question will be finished in next 3 to 4 minutes. अगर कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो. Okay, that's right, Maninder. Okay, let's move to the next clues. Great guys. Okay, so we are done with this, and ये 2 clues मैंने साइड में रखे, ये हम लास्ट में चेक करेंगे. Okay, the last performance was by Rani and the item was assigned by Gagan. So which one is the Rani? Is it 4th or 8th, Nicole? Is it 4th or 8th? It will surely be 8th. Last performance ये होगा. This one is the last. So are you getting this? मतलब अब सुनो, इसने मतलब अगर 8th लास्ट अगर रानी नहीं किया तो 4th भी रानी नहीं किया होगा. Yes, रानी must be 4th as well as 8th. एंड जो रानी का लास्ट परफॉर्मेंस है दैट वाज असाइन्ड बाय गगन. सो दिस पर्सन इज गगन. ओके, वन मोर थिंग, द प्रिंसेस को जो था असाइन बाय बादल वो मैंने लिखा नहीं था. सो यहाँ पे आइटम 1 वाज असाइन्ड बाय बादल and dance item last रानी जो है 8th was assigned by Gagan. Hopefully you understood up till now. Okay, then we are done with this. देखो निकोल, अभी हमारे पास 3rd 4th तो हो गया, बस एक 5वां बचा है और पहला और दूसरा बचा है. 3 clues we are left out with. Okay, so the items assigned by A, the items assigned by A were performed by consecutively. Now this is the most important clue I can say. If you remember the points, अगर तुम्हें पहले points याद होंगे तो तुम्हें ये सबसे important लगेगा. this one. Okay, ये 2 परफॉर्मेंस हुए, वो ए ने ही असाइन किए हुए थे. एक ही कंपोजर था. ये कौन सा हो सकता है? मनिंदर, निकोल, क्विकली टेल मी. ए के बाद ए ही आना चाहिए. कैन यू टेल मी ये हो सकता है क्या? ये तो
डिफरेंट होने चाहिए। फर्स्ट ऑल 4 वर डिफरेंट, ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है हिंट में। आई कैन शो यू दैट क्लू। द first items performed by the 4 dancers were all assigned by the different composers. तो ए ने 2 कंसेक्यूटिव कौन से दिए होंगे बोलो? यस राइट मनिंदर, रानी एंड प्रिंस। कौन सा वाला नंबर बताओ? 4th and 5th। क्योंकि देखो एक ए इधर दोगे तो ए के बाद तो आना चाहिए, तो इधर तो 2 ए कंसेक्यूटिव आने ही वाले नहीं है, तो यहाँ पे है ए एंड दिस वन इज ए। एज आई सेड गाइस, यहाँ पे लॉजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मेमोरी कितना अच्छा है। तुमने जो क्लू पहले पढ़ा क्या वो तुम्हें याद रहता है? अगर तुम्हें वो याद रहता है फॉर जस्ट 3 to 5 मिनट्स, तुम 4 से 5 मिनट में ये पूरा कंप्लीट करके निकल जाओगे। इफ योर मेमोरी इज प्रॉपर, मींस यू आर एबल टू रिकलेक्ट व्हाट यू हैव जस्ट रीड, दैट्स व्हाट इट रिक्वायर्ड। इसमें कुछ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी नहीं बन रहे। यू कैन सिंपली से ये प्रिंस है, ये प्रिंसेस है, ये रानी है, ये बादल ने कंपोज किया है, ये गगन ने कंपोज, म्यूजिक कंपोजर गगन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये है। जस्ट बाय means keeping in mind the clues, that's what you need. The more observation, that's it. Okay, now the next important clue, अभी यहाँ पे थोड़ा सा possibilities में जाना पड़ेगा, but not that, क्योंकि अभी इतना सारा information अपने पास आ चुका है कि इसमें बहुत possibilities बनने के वैसे ही chances हैं। Okay, the number of performance between items assigned by each of the remaining composers. Each of the remaining composers मतलब क्या? ए कंसेक्यूटिव आया, बट बाकी सारे कंपोजर्स के लिए सब सेम था। मतलब जिसने अगर 2 के गैप में लिया तो सबने 2 के गैप में लिया, अल्टरनेट लिया तो सबने अल्टरनेट लिया, किसी ने 3 परफॉर्मेंस के बाद लिया तो सबने 3 परफॉर्मेंस के बाद ही लिया होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Have you understood this part, Maninder, Nicole? The last 5th point, hopefully you understood that part. Okay, अब एक काम करते हैं कि बी ने इसके बाद कब, बी ने मुझे पता है यहां पे और यहां पे तो परफॉर्मेंस लिया ही नहीं होगा क्योंकि ये सारे डिफरेंट है, राइट? बोल, टेल मी इसके बाद बी ने कब लिया होगा? यस, दैट्स ग्रेट गाइस। सो मनिंदर एंड निकोल, कैन यू टेल मी बी इसके बाद कहां पे आएगा? 1 2 3 4 5 यहां पे आ सकता है। ओके, सम ऑफ यू मे थिंक कि सर यहां पे क्यों नहीं आ, यहां पे भी आ सकता है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होगा? 1 2 3 4 5, तुम 5 के गैप में बी को छोड़ रहे हो, तो अभी तुम्हें जी पे भी 5 का गैप लगेगा, बिकॉज बाकी सबके लिए गैप 5 का ही रहेगा। तो यहाँ पे तुमने जी लिखा हुआ है, तो तुम्हें कहां पे जी लिखना पड़ेगा? फिर 1 2 3 4 5, फिर जी यहाँ पे आ जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग दिस। और फिर ए बी जी डी बचता है, तो डी तो बहुत क्लोज हो जाएगा। 1 2 और 3 ये 2 के गैप में डी आ जाएगा। डी का परफॉर्मेंस तो सेम वे पे नहीं आया। फिर चलो बताओ निकोल एंड मनिंदर, तुम दोनों को बताना है बी कहां पे होगा जल्दी से। बी ने कौन सा परफॉर्मेंस किया होगा? 6 या 7, 2 ही चॉइस है, 6 और 7। These are the 2 choices we have for B. I'm quite sure सबको ये समझ में आया होगा, राइट? निकोल, मनिंदर समझा तुम्हें ये मैंने बी यहाँ पे क्यों लिया? देखो 1 2 3 4, 4 के बाद 4 का गैप छोड़ दिया। यस राइट, दैट्स ग्रेट गाइस। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं? जी पे गगन ने भी 4 का गैप छोड़ा होगा, फिर 1 2 3 4, so this must be G and this must be D
1 2 3 4 and this must be D. अब तुम चेक करो, खुद से चेक करो, यहां पे ए दोनों कॉन्जिक्यूटिव आए हैं, दो बीस के बीच में 1 2 3 4, दो जीस के बीच में 1 2 3 4 एंड दोनों डीज के बीच में 1 2 3 4. Hopefully you understood guys this part. Right Nicole, have you understood this? We are not done 8 guys because हमें अभी भी P और R हो गया, हमें Q और S के बारे में अभी भी चेक करना बाकी है. So what about these two? Think about it. We have some more clues. No composer who assign item princess assign an item to queen. Princess. Now this is the last point that जो हम अभी तक स्किप कर रहे थे. B और A. Composer for princess were B and A. तो for sure B और A किसी में से B and A. तो queen neither B nor A. So here it will be S and here it will be Q. Need not to check it. Yes, that's done. Okay Nicole, tell me how you find this question. Maninder, Nicole, was it tough, easy, moderate? What do you think? In my opinion, it's not that easy. It's moderate I can say, because in exam what was the important part is guys, वहां पे तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं रहेगा कि तुम्हें करना क्या है. यहाँ पे तो मैंने कुछ बताया तुम्हें exactly क्या सिनारियो है and all. The complete thing in exam you need to do it at your own. Easy one Nicole, that's great if you find it really easy. So, but Nicole, I want to ask you something. Were you able to comprehend the information at your own, or you have taken my guidance and then solved, और तुम्हें खुद ही समझ में आ गया था? अगर तुम्हें खुद समझ में आ रहा है, I'll be more than happy. अगर तुम खुद comprehend करके solve कर पाए, that's the thing we want to happen. It should happen means that way कि तुम खुद ही comprehend करके खुद solve कर रहे हो, उस level तक हमें पहुंचना है. So hopefully I'll be able to guide you till that level. Okay, that's great Nicole. Okay, so which of the following is true? Maninder is saying so order is my weakest part, so it's really difficult for me. Okay, yes. So what I can recommend you, it's not order Nico, it's not order Maninder. So I would really like to correct you, because it's totally depends on how many questions you have tried, and do not just listen to some educators. जैसे मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूं, मैं तुम्हें 10 नहीं 1 नहीं, मैं तुम्हें 10 सेट सॉल्व करके दिखा दूं, उससे तुम्हें नहीं आएगा. You need to you need to put efforts at your own, and after that once you practice, make yourself very comfortable with this information. तो तुम 10 सेट सॉल्व करो और सोचो कि हाँ मैंने ये करना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए था. तुम पहले go wrong, that's perfectly fine. Go by the worst case.
तुमने एक सेट लिया, तुमने 5 क्लूज में से 1 2 3 4 5 ऐसे कनेक्ट करना चाहिए था, बट तुमने 1 and 5 कनेक्ट किया, 3 4 कनेक्ट किया, जो नहीं करना चाहिए था. बट देन द वर्स्ट केस सिनारियो से जब तुम जाते हो, देन you build the logic. So I always tell my students कि जब भी कोई स्टूडेंट LR का मीन्स मॉडरेट टू इजी, मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस हम लेते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है गाइस, लकीली वो एक पॉसिबिलिटी सोचते हैं और उनको वो फिट हो जाता है एंड दे गॉट द आंसर क्विकली. तो आई ऑलवेज टेल देम गाइस, यहाँ पे तुम क्विक आंसर्स जब हम पढ़ रहे हैं तो क्विक आंसर्स डजंट मैटर. आई विल मीन्स प्रीफर कि तुम्हें वो लकीली जल्दी ना मिले, तुम्हें जितना देर बाद मिलेगा, वर्स्ट केस में मिलेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा. सो दैट्स द की पॉइंट. And Maninder, you need to just make yourself comfortable with puzzles, and that the thing you can just do it by just practicing more and more questions from last CAT papers. से ही practice करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, because we just have 4 months in our hand, so that's more than sufficient time guys. Actually अगर देखा जाए CAT के लिए, Quant, LRDI सब के लिए 4 to 5 months more than sufficient है, given a proper स्ट्रैटेजी. मीन्स आज से लेके तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इन अ मंथ 100 आवर्स तुम्हें कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस, मॉक्स एंड कॉन्सेप्ट्स लर्निंग एंड ऑल. सो 400 आवर्स के लिए अगर तुम नेक्स्ट 4 मंथ्स करते जाओगे, सो डेफिनेटली यू कैन नेल द कैट. ओके, सो द ऑर्डर, सो मनिंदर जैसे तुमने बोला कि तुम्हें ऑर्डर लगाना थोड़ा सा वीकेस्ट पॉइंट है, that will come only after the practice. Okay, so guys, let's quickly finish it. Which of the following is true? The third performance was composed by A. The third is not composed by A. The second performance was composed by D. That's true, right Nicole? Then which of the following is false? Q did not perform any composition by G. Q does not. That's wrong. So this one is the false. We want false only. This is false. Maninda, we want to get false. Right, B. Then second it is 2. Sorry, question number 2 is answer option A. The sixth performance was composed by, the sixth performance was composed by, so these are the 4, 5 and 6th was composed by Badal. And the last one, which pair of the performance were composed by the same? Let's check it. Third and 7th, if I do third and 7th, third and 7th are different, definitely different. It's not same. First and 7th, if you look at first and 7th, first is B, 7th is D. It's not same. First and 6th, first and 6th, right, दोनों बादल ने कंपोज किए हुए हैं, फर्स्ट एंड 6th. That's right. So hopefully you enjoyed this video guys, and I'll recommend both of you and all of you, those who are watching my video, this is the part 4 of my video, so just go through part 1, 2 and 3, जिसमें मैंने complete 2019 का slot 1 सॉल्व किया हुआ है, and slot 2 हम आज से start कर चुके हैं. So by next Friday 2019 का slot 1 slot 2 दोनों का complete solution you will be getting. Okay, that's great guys. Welcome Nicole. Okay, so guys, if you want to attend my special session, you can just download the Unacademy learning app and come on Unacademy. You can directly interact with me, where you'll get if you go for this subscription, you can get 10% discount if you use my code SHAM1,
And there are many more benefits about this subscription, guys. You will have the mock test, you have the access to the top educators of India, all the sessions from top educators of India that you'll get the access to. So do use this code if anybody of you are willing to go for the plus subscription. And at last, on YouTube you can just, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, so guys do like, share, subscribe, don't forget to press the bell icon so that you'll be notified about my next videos. And at the same time you can join us on Telegram group. So this is CAT4MBA, where you'll get the PDF notes for each and every session that we conduct on YouTube as well as on Unacademy platform. Okay, good night. That's it for the day, guys.